Okay, next is question number 19. जी खतीजा पर क्वेश्चन नंबर 19 जी जी ये बच्चे स्टार्ट करें. So how many things are given in this question? The water is flowing and hitting the wall, and we have to find the horizontal jet of water density is this. Density of water is given. The cross-sectional area of the pipe is given, and the velocity of the water is given. Or the show that over a time is given. The mass of water hitting the, we have to find this. Mass is unknown. जी. अब इसमें बताएं कौन सा फॉर्मूला यूज करें. जी. The velocity is given. We have to find the kinetic energy is not given. Kinetic तो नहीं है ना. और क्या लगा सकते हैं इसमें. जी. एनर्जी नहीं है. हम्म? वही मैं सोच रहा हूँ. Half MB is given. फिर इसके बाद no, we have to just apply density, because density and mass, we have to find mass. The density is given, so मैं लगाता हूँ density equals mass over volume, or next is mass equals density into volume. Now volume, okay, ये अब हमें गिवन है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ गया. वॉल्यूम पे डेंसिटी गिवन है. तो हम ऐसे करते हैं, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम. सो डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम. ये लगाते हैं. डिस्टेंस इज क्या मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 जी. एंड इन दिस केस द डिस्टेंस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द पाइप. हाइट कहते हैं या लेंथ ऑफ द पाइप. ठीक है, विच इज 8. तो 8 आ रहा है आंसर. तो 1 सेकेंड. और वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है, इधर लिखता हूँ, एरिया इनटू द लेंथ और हाइट. एरिया है बच्चे 1.5 10 raised to power -4. We have to find the volume. Volume is not given. And length is, length आपने बताई है 8 है.
area is 1.5, 10 raised to power minus 4 into 8. 60, acha 1.2 and 10 raised to power 10 raised minus 3. Okay, now we know the value of volume. अब हम mass find करते हैं. Mass equals density. Density is 1, 10 raised to power 3. And the volume is 1.2, 10 raised to power minus 3. So the answer is just 1.2. No, why? It's 1.2. देखो ना plus 3 and plus 10 power plus 3 and 10 power minus 3 will be cancelled out. So you just left with 1.2 kg. ये important है वैसे. इसमें हमने क्या क्या यूज किया है? First step is we use the formula of density. यहाँ से आपके पास mass become equals to density into volume. Now volume equals A into L, and L equals speed into, oh sorry, speed distance, L equals yeah, सही कह रहा हूँ, speed into time. ठीक है? These are the steps. Next is calculate the decrease in horizontal momentum of the mass of water in A due to hitting the wall. Decrease in momentum, तो हम change in momentum आपने find करना. Change in momentum is mv minus mu. Now the water is bounced back after the collision with the wall, so we have to change the sign. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ mv plus u लिख देता हूँ, because the sign become opposite and minus minus become positive. So the mass is 1.2 and decrease in momentum due to hitting the wall. But after hitting the wall, वो क्या हो रहा है? The water runs down the wall after hitting. अच्छा, उसकी हम final velocity assume करते हैं कि change in velocity is just 5. ठीक है? The velocity is 5 meter per second. चेक करें क्या आंसर आता है. 6. Okay, 6.0 Newton. The magnitude of the horizontal force exerted on the water by the wall. तो wall कितनी लगाएगा? जितना action reaction are equal. So delta P over delta T, whatever the momentum of the water is 6. So 6 over time is 1.6. Check करें. 3 point, अभी तक तो simple है. So this is 3.8 लिख देते हैं. Next is state and explain the magnitude of the horizontal force exerted on the wall by the water. पहले हमने क्या निकाला? State and explain the magnitude of horizontal force exerted on the wall by the water. और यहाँ पे on the water by the ball, by the wall, क्या होगा? State and explain. Equal होगा and how? Action, हाँ हाँ जी जी. तो 1 marks का ये, तो हम लिखते हैं the force is 3.8 Newton according to the Newton's third law of motion. पीछे देखिए आंसर क्या है इसका. Third law, क्योंकि state and explain है ना.
Third law of motion. Yes. Okay. Calculate the pressure exerted on the wall by the water. Pressure find करना. Pressure is force over area. Force is 3.8. Area I think is given. Area is 1.5 10 raised to power minus 4. यही था ना? जी बच्चा. 2533.3. ओके. ओके यहाँ पे so 25333.3. So this is 25,000. Is it 25,000? That's good. तो इसमें बचे अगर आपको कहा जाए तो जस्ट ए पार्ट इज डिफिकल्ट एंड ऑल अदर आर वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज डिफाइन वेलोसिटी. जी बच्चे. यस. रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. Rate of change of displacement. A remote controlled toy aircraft is flying horizontally in a wind. Figure 3.1 shows the velocity vector to scale of wind and aircraft in still air. Okay. Aircraft velocity in still air is 42 meter per second. The wind's velocity is 23 meter per second and it makes an angle of 54 degree with the north. Okay. So the velocities of aircraft and wind is given, angle is given. Determine the magnitude of the resultant velocity of the aircraft. Magnitude of velocity of the aircraft. इसमें क्या यूज करें? ये देखें. अच्छा, ये बनाते हैं. So the one component is 40. Well, कैसे बनाते हैं? 42. Now I have to join the vectors by head to tail. Head to tail करते हैं. So this one is the head. Oh, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं. Angle is always measured between the tails. Angle is always with the tails. So इसकी tail को हम यहाँ पे रखते हैं. So इस 42 को जरा नीचे लिखता हूँ. This one is 42. This one is 23. Angle is always measured between two heads or two tails, not between head. एक का head है, 23 की tail है. Head of सही है ना, head to tail आ गया. 42, 23. Now this will be the, this is simple just. आप ऐसे याद रखें, this is a head to tail rule. Simple कर देते हैं. Head to tail. And next is this one is the resultant. Now the angle is not 90 degree in between them. So whenever the angle is not 90 degree and we have to find the resultant, so we have to use, if the angle is 90, मैंने आपको बताया था. If theta is 90 degree, then resultant is very simple. You have to use क्या कहेंगे, a square plus b square.
And if the theta is not 90 degree, then you have to apply the cosine rule. AB cos theta a square, यूनिट वन में मैंने ये लिखवाया हो, ये सॉरी यूनिट टू में, a square plus b square minus 2ab cos theta. This is called cosine rule. So this is equals to square root of a square. A square is 42 square plus b is 23 square minus 2a. A is 42, b is, where is b? B is 23. Oh, अच्छा हमें just angle ही find, magnitude find. So this is equals to cos 54. Check करो. $34. So the answer is 34 meter per second. Next is the engine of the aircraft in B stops. The aircraft then glides towards the ground with a constant velocity at an angle of theta to the horizontal. अच्छा, अगर in case अगर आपको ये फॉर्मूला ना आता फिर क्या करती आप in first part? अगर in case ये ना आता फिर सेकंड मेथड तो वही है ना, कंपोनेंट्स बनाए. चलो वो लेंथी होते, चलो फिर वो करते हैं. अच्छा, हम पहले तो पहले हम ऐसा करते हैं, सेकंड मेथड लिख सकते हैं. सेकंड मेथड तो उसके लिए बचे हम, we have to make a component of wind's velocity. The velocity of the wind is in this direction. Now we have to make their two perpendicular. आज अब्दुल्ला की तरह. Okay. So we have two components. The angle in between them is 54. This is 54. This one is 90. So this would be, this is 54. This is 90. 36. Okay. This is 36. The velocity of the wind is 23 meters per second. And okay, ये velocity हो गया 36, 56, 90. Now we have to make their two components. So the one component is 20, opposite to the 36 is 23 cosine, so sine 36, and this is 23 cos 36. ऐसे ही होगा ना, चेक करें क्या आती है वैल्यूज. 23 cos 36 is 18.6. Okay, and 23 sine 36 is 13.5. Okay, now अब हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं. द वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस. मैं लिख देता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस. क्या वेलोसिटीज है? we just have one component which is 18.6. This is the velocity along x-axis because the aircraft is only moving along y, not along x. Now along y-axis, the sum of the velocities are 13 points. Oh,
यहाँ पे देखिए 42 is upward minus, yes, check करो, 28.5. Yes. Now we have to take a scale. ये वाला आप कह रही थी ना method. 18.6 scale plus 28.5 scale. You will get the same answer. 34. पीछे क्या आया था? 34 ही था ना? Okay. बस ठीक है, कोई बात नहीं. Next is the engine of the aircraft in B stops. The aircraft then glides towards the ground with a constant velocity at an angle of theta to the horizontal as shown in the figure. Okay, the aircraft is moving downward. And the distance between, I think this is x, and here you have a point y. Okay? The distance between x and y is 280. The weight of the aircraft is 46. Angle is just theta mentioned. So you have it. Okay, we have to calculate the theta. Theta कैसे find करेंगे? ये component बना देते हैं. एक तो component ये होगा ना. This one is the horizontal. This one is the vertical component. इधर horizontal का arrow लगा दो. Okay, this one is the, okay, the, सोचने दो. जरा पढ़ते हैं लिखा के. Oh, रुक रुक. The aircraft has a weight is given, distance is given, bit from x to point y. The change in gravitational potential energy, ये hint है हमारे पास. The change in potential energy is this. Assumes that there is no wind. So change in potential energy लगाते हैं. Change in potential energy equals mg delta h. The change in potential energy is 6100. mg is, m और g अलग नहीं करना इसमें, डेल्टा एच. सो आपको हाइट मिल जाएगी. करते हैं अभी. 6100 over 46 is 132.6 meter. This is the height. Now 132.6 means this one is the 132.6 is the height. Now sin theta लगा देते हैं because some people have, तो sin theta होता है perpendicular over hypotenuse. So sin theta, some people perpendicular is 132.6, ab is the hypotenuse 280. So theta equals sine inverse 132.6 over 280. Check कर लें. Yes, 28 degrees the answer. Next, calculate the magnitude of the force acting on the aircraft due to the air resistance. Aircraft due to the air resistance. Magnitude of the, okay,
सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट, लेकिन ऊपर तो लिखा था assume that there is no wind. ओके ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं कि द एयरक्राफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड ना, सो लॉस इन पोटेंशियल equals gain in kinetic plus work done against frictional forces, है ना? So the loss in potential energy is 6100, which is already given. So how much the energy is gained when the aircraft is moving downward? ये important है. Where is the speed? हाँ, अच्छा ये देखें. The aircraft then glides towards the ground with a constant velocity. Velocity is constant. It means the kinetic energy is constant. So there is no change in the kinetic energy. So the no change in kinetic energy, zero लगा देते हैं, and work done is F into D. So 6100, F is the force, frictional force, into the D. D is the 280. So force equals 6100 over 280. So 610 over 28. 21.8. So 22 Newton. तो इसमें important क्या था कि there is no gain or change in the kinetic energy. Next, D part पढ़ें. Who is standing on the ground? Okay, आगे. Oh, this question is related to the waves. लेकिन मैं सॉल्व अभी कर देता हूँ, फिर आप जब आप रिवीजन किया करेंगी तो आपको समझ आ जाएगी. तो इसमें how many things are given? Uh, speed of the source. Source is the okay. इसकी हम एयरक्राफ्ट की स्पीड निकाल. Speed of source. Source mean aircraft. So the distance is 280 and their time is 14. So speed of the source is 20. So 20 meters per second. And अच्छा अब ये फॉर्मूला भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर रिवीजन में आपको समझ आ जाएगी. This is the observed frequency into speed of the sound divided by again speed of sound minus. Why we use minus? Because it is moving towards the observer, and if it is moving away, so we have to use positive sign here, and then velocity of the source multiply by the actual frequency, source frequency. So observed frequency equals 340 is the speed of sound over 340 minus 20, and the source frequency is 450 hertz.
चेक कर ले, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट। 78.12। और 78, चेक करें इसका आंसर। कहीं गलत तो नहीं कर दिया? द ऑब्जर्वर, ओ नहीं नहीं नहीं, गलत, मेरे से गलती हुई है। लिखा हुआ है द ऑब्जर्वर हियर्स द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर हियर्स, सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज गिवन, 450 is given, and you have to find the source frequency। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। इसको पहले सॉल्व करें एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 450 डिवाइडेड बाय द वैल्यू। फोर ट्वेंटी थ्री, सब कुछ सही लगा, 423, एंड दिस इज 8.5, तो 420 लिख देते हैं। ठीक है, 420 चेक करना, सही है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये खत्म हो गया। अब वो क्वेश्चन नंबर याद है जो आपका था, हमारा पेंडिंग था, शुरू में था वो, ये आ गया नहीं, ये याद है स्टार्टिंग में था। मुझे याद है इस पेपर में मैंने बच्चों को करवाया भी है, वो मैंने जिस पेज पे सॉल्व किया था ना। अच्छा, ये है दिस वन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 7, सी पार्ट। अच्छा, इसमें जरा एक दफा क्वेश्चन आप खुद रीड कर ले। पिक्चर देख ले, पिक्चर से आपको क्या नजर आ रहा है। वी हैव अ बीम, बीम है, नॉट फुली सबमर्ज्ड। जी बच्चे, और इसमें हमारे पास इन फर्स्ट पार्ट वी कैलकुलेट द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और वो तो सिंपल था। ओके, अब तो ढूंढने के लिए था वो, एंड देन वी कैलकुलेट the value of area of what? Area of the cylinder. Okay, next C part पढ़ ले। और अच्छा, ओके, तो इसमें हमारे पास
हमने बच्चे क्या किया था, वी मेड अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ओके, और उसमें हमारे पास मोर वाटर इज ग्रेजुअली एडेड टू द कंटेनर, पानी ज्यादा हो गया, सो दैट द डेप्थ एच ग्रेजुअली इंक्रीजेस, द लेंथ एक्स इज कॉन्टिन्यूसली एडजस्टेड, वेयर इज एक्स। ओके, इसको आप एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट आई थिंक बीम इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ यही है, so that the system is in equilibrium. On figure 3.2, sketch the variation of x with age. जी बच्चे। तो इसमें हमारे पास बच्चे उस यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना था पहले, 2.x, 2.6 is the weight, x is the distance, and upthrust is now 4. Maximum upthrust कितनी हो जाएगी, that is become equals to the weight. Initially the upthrust is just 1.4 and अपथ्रस्ट जो है वो रो जी वी होती है ना। फीड जो पहले हमारी इक्वेशन बनी थी वो थी हमारे पास, ये इक्वेशन यूज करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस यू इंटू 0.4 ना, ऑन दिस साइड यू हैव 2.6 इंटू 0.4। तो मैं बच्चे ऐसे करता हूँ, इसको जरा रेस करते हैं। अभी ना करें, अभी आंसर का मुझे नहीं पता। ओके, सो the anti-clockwise moment is 2.6. We didn't know the value of x because we have to make a relation between x and h. Now, on the clockwise moment is due to upthrust and the weight, है ना। So 4 minus upthrust. तो इसमें हम लिखते हैं 4 minus u, तो बच्चे मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 4 माइनस यू की जगह पे हम लगाते हैं रो जी वी, रो जी वी। अभी तो मैंने ऐसे नहीं किया था, नहीं। अच्छा, सो मैं कहाँ पे इसको सॉल्व किया था, ओ यहाँ पे। ये किया हुआ मैंने 2.6 इंटू एक्स प्लस, चले दोबारा करते हैं, मुझे याद नहीं है, माइनस यहाँ पे हम लिखते हैं 1000, रो इज 1000, जी इज 9.81 और रो जी वी, वी इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। सो एरिया इज 1.4 10 raised to power minus 3 and we didn't know the value of height because we have to make a relation between them. Next is यहां से इसको सॉल्व करें, देखें क्या आता है आंसर। दोनों को यहाँ पे हमारा है तो सेम ही, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। हाइट इसकी एच है और 1000 रो जी वी into upthrust is just 4. Okay, 4 minus
मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने जस्ट अभी इसको सॉल्व करें, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 - 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 multiply by 1.4 10 power minus 3, so 2.6x। और यहाँ पे क्या है आपका आंसर, -9.734 with h। ओके, और इसमें हमारे पास क्या हो सकता है। h दोनों के साथ तो नहीं है, 4h। इसकी हाइट कितनी थी, 1.54। ओके, अब इसको आप डिवाइड कर दें जरा। x equals -9.734 divided by 2.6 with h। हम्म, 3.74। इसको आज मैं करता हूँ 100%, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, आज ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।